what is DT? We are starting DT worship course. So what is DT? DT क्या होती है? Okay, so according to you, your definition was कि एक DT वो होती है जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है और एक आइडल वो होता है जिनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है. अब मुझे बताओ, आपके गोपाल आइडल है या DT है? कैसे हैं? प्राण प्रतिष्ठा कहाँ पे हुई है? With your definition, you said कि DT वही होती है जो जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है. तो कहाँ हुई आपकी प्राण प्रतिष्ठा? फील नहीं, आई डोंट वांट फील. आई फील आई एम अमिताभ बच्चन. दैट डजंट मेक मी अमिताभ बच्चन ना. रियलिटी हैज टू बी देयर. प्रोसेस होना चाहिए उसके लिए ना. जैसे जो आपके घर में ट्यूबलाइट है, जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं करोगे, वो ट्यूबलाइट आपके घर में लाखों हजारों साल तक पड़े रहेगी, कभी जलेगी नहीं. जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रीफाई नहीं होगी अब तक. उसी प्रकार जब तक प्राण नहीं जाएगा डीटी में, जब तक आपको कुछ भी फील हो, बट इट विल नॉट गिव यू एनीथिंग. देयर विल बी नो रेसिप्रोकेशन. सो नाउ टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक योर गोपाल वर्शिप इज डीटी वर्शिप और आइडल वर्शिप? आइडल ओनली प्रभु जी, आइडल. मतलब 1 मिनट में आपने आपके गोपाल को आइडल बना दिया. Abhishek is not pran-pratistha. Abhishek, though, we can do anything without pran-pratistha also. Abhishek is not pran-pratistha. Abhishek is just bathing the Lord. That you have to do every Ekadashi, every 15 days. With love, okay, very nice. With love. So now I will tell you that 2 types of pran-pratistha is there. For the temple, the mantra chanting is the pran-pratistha. Okay, mantra chant. You invoke the Sarup Shakti of the Lord. Okay, Sarup Shakti of the Lord to descend in the deity in the temple. And this is how you do pran-pratistha in the temple. Obviously उसके लिए बहुत elaborate होता है वो. और second pran-pratistha होती है भाव से, with your bhava. Okay, with your consciousness, with your love and devotion. That is the second kind of pran-pratistha. That is for the householder. Understand? जो आपके घर में जो डीटी होती है उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है आपके भाव से. जो टेम्पल में होती है उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है प्रॉपर मंत्रा से. So these 2 types of pran pratistha are there. One with your bhava, which is called Bhagavad Vidhi. Okay, Bhagavad Vidhi. And the first is in the temple, that is called Panchratika Vidhi. You do all kinds of mantras and all those things, and then you evoke, call the Lord, invoke the Lord from Golok. His Swarup Shakti, like I told, the tube light is there. As long as the electricity doesn't go, it will not work. Similarly, you electrify your murti in the temple with Swarup Shakti. What is Swarup Shakti of the Lord? Lord has 3 kinds of Shaktis. Okay, in Golok. That is called the Swarup Shakti. Swarup means his own Roop ki Shakti, his own form. So he expands his form into three ways. Samvet, Sandini, Haladini. 3 energies. Balram and Radharani and himself. Samvet, Sandini, Haladini. So when we invoke the Swarup Shakti of the Lord, the Haladini, the Samvet and the Sandini Shakti of the Lord from Golok Vrindavan by mantra meditation, by mantras. By mantras you invoke it and you ask the Shaktis to enter the deity. The Murti of the Lord. And it's a process, how it is entered, which mantra many times to chant, and all those things is there elaborately described in Hari Bhakti Vilas. Okay, so with that you do the process, and then the deity is electrified with its own Sharup Shakti, and the deity start behaving as the personality. Okay, so this is the process of pran-pratistha of the Lord. It's a very elaborate process.
But in the home, it is not recommended to do this pran-pratistha. Why? Because in the temple, there are many people who can serve the Lord nicely. So even if you are not well, someone else can do it, right? Because uh, when you do pran pratishtha, then you have to offer 4 time bhoga every day, deity every day. You have to do abhishek of the Lord, the small deities, change the Lord's dress, once a day chappan bhog, and so many bhoga 4 times a day, 4 times a day, and at least 4 times a day arti you have to do. So many things are there, in the temple. So in the temple, there are many, many devotees. So this month, pran pratishtha is done for the temple. But in home, you are there, your husband is there, your husband will go, or your wife is there, one of them, you all will go to work, or sometimes both of you go to work, you know. So you can't be at home all the time because you have to earn also money, everything. It's a small nucleus, very small family we have now. We don't have, big, even big families also, had not necessarily everyone will be dedicated to the DT only. So that's why it is told that to invoke the Lord by Bhagavat Vidhi in home, by uh, bhava, your emotions. So when you worship Laddu Gopal, when you have Laddu Gopal, when you have Radha Krishna or Gaur Nitai, 12 years, if you worship any of them, 12 years, for 12 years, regularly, if they worship, then automatically Pran Pratishtha happens. So if you have worshipped your Gopal for 12 years, already प्राण प्रतिष्ठा ऑटोमेटिक प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उनकी. If you worship your गौर निताय for 12 years, automatically प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है. Anything you worship for 12 years, like there is Narsinghadev, if you've gone to Juhu temple in Mumbai, there is Narsinghadev murti in the side. It's like a diorama. Okay, it's not a vigraha, it's diorama. But even then, devotees pay obeisances to Narsinghadev. You might have seen. How many of you been to Jew temple? You might have seen, people first go to Prabhupada, then Gaurnitai, then Radha Rasbihari, then Sitaram Lakshman Hanuman, then to Narsinghadev. Right? Huh, Mumbaikars? Right? Hmm. So why they do that? Why they are just for, because उनका तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है तो क्या क्यों कर रहे हैं उनको वो? उनके Prabhupada told that if you pay obeisances to any deity for 12 years, just paying obeisances to any deity for 12 years, उनका प्राण प्रतिष्ठा अपने आप हो जाता है deity का. Just by paying danvat to any deity of the Lord for 12 years continuously, उनका automatically प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है. Already the Sarup Shakti descends in that. So because bhava, you are giving obeisance, मतलब अपने अपने भाव अर्पित कर रहे हो आप deity को. You are worshipping the deity with your bhava. So automatically the Lord comes and descends in the deity form of the Lord. So this is what so basically what we are going to cover here, in our uh, training is home deity worship more. Okay, I will add some temple worship also, because none of you are brahmacharis right now in the temple, right? Most of you are grastas or going to be married in the future, right? And so you will have your family, and so you will need deity at home, to worship the deity. So why we should worship the deity? Why a grasta should worship the deity? This archana pradhati is very, 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 very important for grastas. Why? In the house there is a lot of sense gratification, right? So we tend to forget the Lord very much in our home atmosphere. Husband, wife, children, or parents, or so many are there. So we tend to, so that we purify our house and engage our family members. Also very nice. Yeah. So there is a lot of sense gratification in the temple, right? And our senses are just engaged in what? Eyes are engaged in watching television or reading newspapers, you know.
Nose is just engaged in smelling the food and everything, whatever is there. Ears are just engaged in hearing some mundane music or, mundane things, other than chanting. We do all these things. People don't have deities. Your hands and legs are, engaged in sense gratification, especially those who are grastas. They are, if there is no Lord in the house, then, you will be constantly engaged in your, physical life and everything in the house. So what does DT does is, it, because obviously, many people break that also, but one should not break. Very strict when you have DTs. Restrict हो जाता है हमारा sense gratification. And because we have to get up early in the morning, we have to take bath. अगर डीटी नहीं होगी तो चैंटिंग तो हम बिना बात के कर सकते हैं, राइट? तो मैंने भी 10-11 बजे नहा लेंगे, 2 बजे नहा लेंगे, दोपहर को नहा लेंगे, 4-5 बजे नहा लेंगे, रात को नहा लेंगे, ऐसा लेजीनेस हो जाता है अगर डीटी नहीं होती है तो. नो रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट? यू कैन, बिकॉज चैंटिंग तो हम वैसे भी रीडिंग चैंटिंग हम बिना वर्शिप के कर सकते हैं, बिना नहा के कर सकते हैं हम. So then we tend to go into mode of ignorance and passion, because unclean life is mode of ignorance and passion. So deity worship makes your house sattvic, and it elevates your consciousness to pure goodness, Shuddha Sattva, pure goodness. You get up, you have to get up early, you take bath, you go do, or do your deity worship in the morning, and then you go and do Tulsi Puja, then you go and make some bhoga for the Lord. And when there is no deity, then हम बना रहे हैं और साथ साथ में चख भी लेते हैं हम, राइट? इसमें कैसा बना है, क्या बना है, टेस्ट. बट डीटी है तो इवन द टंग इज कंट्रोल. वाचो वेगम, मानस क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदार उपास्य वेगम. Everything is controlled, because you have to cook for the Lord. So cooking for the Lord means, you have to be very expert in the cooking. Otherwise Lord को कभी नमक ज़्यादा डाल दिया, कभी मिर्ची ज़्यादा डाल दी. तो जिनकी जो डीटी वर्शिप जो करते हैं, अगर आप परफेक्टली डीटी वर्शिप कर रहे हो तो जो भी त्रुटि होती है डीटी वर्शिप में, then you also get the reaction of that. If there is too much hot, then your tongue will also get hot, burnt. If too much mirchi, then your stomach will become upset. If too much namak you offer to the Lord, then you'll get blood pressure. So all these things happen, So one has to be very expert in cooking. So you cook for the Lord, and when you cook for the Lord very nicely, then everyone in the house also gets a nice food, Otherwise, डीटी नहीं है, बीबी और पति का झगड़ा हो गया, बीबी का मन नहीं कर रहा है कुक करने को, तो बेचारा पति को स्विगी से मंगाना पड़ेगा फिर. हाँ, लेकिन जब डीटी है घर में है तो कितना ही झगड़ा हो, भगवान के तो बनाना ही पड़ेगा, राइट? यू हैव टू कुक फॉर द लॉर्ड. यू कुक फॉर द लॉर्ड, and then you offer the Lord, and then even झगड़ा भी हुआ तो भी बच्चों को, हस्बैंड को, सबको प्रसाद तो मिल जाएगा. So life become very regulated when you have deities. Plus all your senses are engaged. Your mind is always, engaged, Hare Krishna, I have to cook for Krishna, I have to do this for Krishna, I have to get this for Krishna, then dressing up Krishna, and everything. Your mind is engaged, your senses are engaged, the whole house atmosphere becomes Vaikuntha. So it's very, very important that, grasthas, householders, have deities at home. Deity का मतलब, deity, you can have picture also, Gaur Nita picture, Jagannath, Subhadra, Gopal. Radha Krishna deities should not be had. We should not have Radha Krishna, because थोड़ा problem हुआ worship में, then the repercussions are also very, very huge for Radha Krishna. So Gaur Nita deity you can keep, Gopal you can keep, Jagannath, Subhadra you can keep, or pictures you can keep. So how many of you have deity, the temple, altar in your bedroom? So this is the biggest problem. Okay, in your room, calendar is gone. Okay, that's fine. Pictures you can have in your room, but like picture like on the walls. But the picture you're worshipping, the murti you're worshipping, all this should not be in the room. Why it should not be in the room? I'm telling you. Because in the same room you sleep. Okay,
The same room you take bath and come. Obviously, in your room there will be washroom also next. You go, urine, stool, everything there, right? So all these things, you may have sometimes food in the same room, even though you may put parda. You may pass gas in the same room. So many things. So this is the reason why the deity or the murti or the picture should be in the separate room, because this all comes in DT अपराध, सेवा अपराध. ये सब सेवा अपराध में आता है. For a grahastha, husband wife, obviously they become physical also in the night many times. So if the Lord is in the same room, then it becomes an offense. It comes in seva aparad. You may yawn in the room. Yawning is in account of nectar of devotion, seva aparad. You may spread your legs in the room, seva aparad. Understanding? So these all come in seva aparad. So find a place in your home. Kitchen is the best place you can have. If you have no other place, have it in kitchen or in the hall. Find a place where you can have the deity altar, temple of the Lord. Otherwise, you will commit many seva aparad, and then you'll think, अरे मेरा progress क्यों नहीं हो रहा है? मैं तो सब कुछ सही से कर रहा हूँ, मेरा progress क्यों नहीं हो रहा है? Yeah, kitchen is fine, because kitchen में food होता है तो वहाँ पे consciousness भी रहेगी, वहीं offer हो जाएगा. तो kitchen is fine, So living room is best. Yeah, hall is best. Your bedroom should not be there. Hall you can keep, or kitchen you can have, or a separate. What you can do, balcony होती है. Balcony आपके घर में सबके जगह balcony होती है, right? है ना? तो balcony को ये कर दो ना, separate कर दो. balcony को आपका जो हॉल के साथ में balcony होगी, हर घर में होती है balcony. तो balcony को separate कर दो. एक आता है ना, कुछ भी एक्रेलिक का कुछ लगा लो वहां पे, या स्टैंड आता है, स्टैंडिंग स्टैंड, उससे सेपरेट कर लो, एंड वहां पे आपका डीटी का रूम बना लो. तो एक सेपरेट भी रहेगा, प्लस घर में है तो कॉन्शियसनेस भी रहेगी आपके. व्हाट अबाउट वन रूम? या दैट इज अ बिग प्रॉब्लम. वन रूम. सो वन रूम को अगर आप सेपरेट रूम बना लो, वेयर इट इज सेपरेटेड. इफ यू डोंट हैव, व्हाट कैन यू डू? बट देन उसको एक स्टैंड ला के एक सेपरेट रूम बना लो. Understood? And वहां पे you can do your deity worship. So because फोटो तक है जब तक ठीक है, होना नहीं चाहिए फोटो भी, बट ओके, मैनेजेबल होता है. बट एक बार जब गोपाल है, या गौर निताय है, या राधा कृष्णा, या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, बहुत लोग को मैंने देखा है इस्कॉन में, वो अपने बेडरूम में रखते हैं डीटीज को, और वो उसमें फिर इतना अपराध, सेवा अपराध होता है, वो वीड्स बढ़ते रहते हैं उनके अंदर, एंड देन फाइनली फॉल डाउन हो जाता है. बिकॉज यही प्रॉब्लम है. मुंबई में रहते हैं अपन, बड़े बड़े शहर में तो वन रूम होता है वहां पे, राइट? सो नॉट डायरेक्शन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट राइट नाउ, ओके? बिकॉज आई टोल्ड यू, what we are talking right now is भागवत विधि, भावा फॉर द होम. ये जो डायरेक्शन है, ये सब है, ये पंचरात्रि का विधि में आती है. दैट इज फॉर द टेम्पल. आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है वास्तु का, वो सब का कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप वहां पे रखो जहां पे सेपरेट हो, बस उतना देखो. वास्तु का मत देखो मंदिर, क्योंकि आप भाव से कर रहे हो, राइट? आपका डीटी का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है घर में. यू आर सर्विंग विद भावा, विद भागवत विधि. सो उसमें इतना वास्तु देखने का जरूरत नहीं पड़ता है ना. वो यदि आप कर्म कांडा फॉलो कर रहे हो, कर्म कांडा प्रोसेस, है ना, तो उसमें पंडित आएगा, वो बोलेगा वास्तु देखो, ये सब करो. बट यू आर नॉट फॉलोइंग कर्म कांडा प्रोसेस. द डीटी, you have Gopal, you consider Gopal as your son, Radha Krishna as your companion, like that. You have a relationship with them. Curtain से also you can separate. Yes, curtain से separate कर सकते हो. But curtain should be big curtain, like rectangle, पूरा साइड से कवर होने वाला कर्टन ऐसा होना चाहिए. All three sides. वॉल के साइड में जो डीटी होगी, बाकी
और जो बाकी 3 साइड है पूरा कर्टन से कवर हो जाए, तो इस टाइप का कुछ करना, राइट. So, very important. And then how many of you have Prabhupada Kirtan Dhun in your home? Prabhupada Kirtan Dhun from the store you can buy. What happens is because, अगर हमारे एक तो Prabhupada Kirtan से, आपका पूरा घर सही हो जाता है, कॉन्शियसनेस सही रहता है आपका, everyone is hearing Prabhupada Kirtan, so उससे कॉन्शियसनेस लेवल वाइब्रेशन अच्छे रहते हैं. सेकेंड क्या फायदा होता है इससे कि हमारे यदि डीटी वर्शिप में कोई ऑफेंस हो गया है ना, एनी ऑफेंस व्हेन वी आर डूइंग डीटी वर्शिप, तो वो प्रभुपाद के कीर्तन से, बिकॉज इन कलयुगा हरिनाम कीर्तन से यू हैव टू डू वर्शिप आल्सो, सो दैट इज बीन टेकन केयर बाय प्रभुपाद कीर्तन. अंडरस्टैंड? सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ यू जो घर पे गोपाल है, गौर निताय है, पिक्चर्स है, अपने घर में एक तो ऑल्टर सेट करो सेपरेट रूम में. सेकेंड, प्रभुपाद का धुन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपसे भी कोई सेवा में अपराध हो गया घर पे, many times you may, you may have to go somewhere, right? And you may not be able to offer bhoga to the Lord, or you may have to go some outside place, and who is going to serve behind? So Prabhupada serves. If Prabhupada is his kirtan, by his vibration, he'll be serving the Lord. So very important to have Prabhupada Kirtan Dhun in our house. Then, in DT worship, very important to have Krishna pictures in your house. Okay? Yeah, always playing. रात को बंद कर दो अगर करना है तो, वरना एकदम स्मॉल वॉइस पे रात को भी कर लो, एकदम लो वॉइस पे. नहीं तो in the night you can off it. But in the daytime, whenever you are awake, Kirtan should be playing. Prabhupada Kirtan should be playing. उससे घर का जो वाइब्रेशन है वो सही होगा. अभी आजकल जितने भी घर जितने भी होते हैं, they all are वास्तु से बने हुए नहीं होते हैं बराबर, right? Plus they all have negative energies in them. So अब आप क्या करोगे? You have limited, बहुत पैसा है तो अपना खुद का घर बना सकते हैं परफेक्ट वास्तु से, सबसे उससे. बट जिसका लिमिटेड पैसा है, वो तो कुछ नहीं कर सकते. उनको जो अलॉट हुआ घर वो लेना पड़ता है. अब उसका वास्तु क्या है, उसके अंदर क्या एनर्जीज है, क्या वाइब्रेशंस है, यू डोंट नो. या फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग टू नाइट टिल योर हस्बैंड कम्स. हस्बैंड बोलेगा बाप रे बाप, हाँ घर कोई मंदिर बना लिया है, अब मैं जा रहा हूँ मंदिर में. So Prabhupada Kirtan Dhun is very, very important. Keep playing. So that will really purify your atmosphere. Purify the atmosphere. जो हमारा घर का वास्तु भी होता है खराब, वो भी प्रभुपाद के कीर्तन में ठीक हो जाएगा. I mean, you yourself saw yesterday, right? How Prabhupada liberated the ghost. Prabhupada has so much power, his vibration. It has never happened in the history of mankind, actually, if you see. Only Ram and Krishna has done this. Liberating a ghost or any such person, whom they kill, or, they can liberate. I don't know if anyone can show me any written record of, any such pastime where a devotee has liberated a ghost and given the ghost a spiritual body. I have not seen this. I have not come across any literature. I don't know if you all have seen something like that. I don't know. I have not seen. So Prabhupada vibrations are very, very potent. They can change the whole घर का atmosphere. They can change the whole घर का vastu. So very important. You keep playing Srila Prabhupada's kirtan in your house. Then even if there's some problem in your deity worship, it will be rectified. And what will it do? It will help you to develop Bhagavad Vidhi. भागवत विधि, बिकॉज जो पंचरात्रि का विधि होती है वो मंत्रा बेस्ड होती है. जो भागवत विधि होती है वो मंत्रा प्लस कीर्तन बेस्ड होती है. तो व्हेन यू आर चैंटिंग मंत्रास, यू कांट चैंट कीर्तन दैट टाइम, राइट? सो कीर्तन बैकग्राउंड में प्रभुपाद का चल रहा है. सो आप मंत्रा से बोल रहे हो एंड कीर्तन भी चल रहा है, सो ऑटोमेटिकली वो भागवत विधि बन जाता है. पंचरात्रि में तो हम पंचरात्रि का विधि से क्या होगा? पंचरात्रि का विधि से हमारा अटैचमेंट तो मतलब बहुत स्लो होगा. पहले तो हमारा प्रोग्रेस कृष्णा के प्रति हमारा प्रोग्रेस बहुत स्लो होगा. प्लस व्हेन यू वर्शिप कृष्णा, राधा कृष्णा और गोपाल और गौर निताय और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, दैट वर्शिप इज टेकन एज
Lakshmi Narayan worship. It's not taken as Krishna worship. When you do it just with Palsratika and mantra meditation, mantra. Because to worship Krishna, you need bhava. To worship Krishna, you can only worship Krishna with bhava. You can't worship Krishna with mantras. Okay, so that is just taken as Lakshmi Narayan worship. So many people may be having Radha Krishna at their home, but if there is no bhava, then you are not worshipping Radha Krishna. Or maybe, you may be having Gopal, but if you don't have bhava, then you are just worshipping Vishnu form of the Lord or Lakshmi Narayan form of the Lord. So this Prabhupada Kirtan, it will help you develop that Bhagavad Vidhi, that bhava, with which you can worship the Lord. This is very important. Then, uh, why we have to know how old is deity worship? How old is it? Is deity worship there in all the yugas? Because we see, Satyug meditation, Treta Yug, Yagna, Dwapar Yug, deity worship, and Kirtan, Kalyug Kirtan, right? This is what we have heard. So, is deity worship in all the four yugas? And how old is deity worship? Only in Kalyuga, no. How old is deity worship? In 1944. So, anyways, in 1944, a young boy, okay, 10-year-old boy called Newton Richard Anderson. Newton Richard Anderson. He dropped in a lump of coal mines. In a lump of coal mines. Coal mines, होता है, उसके अंदर he fell down. So, and there he found, this lump of coal he got from that, and in that lump of coal he saw something golden color ka. Okay. So, he got that bell, he got that coal outside, and then he, what do you say, started to separate it, what is there in that, So, then, this, he kept it, in his place for some time. Then his parents came to know, and then the parents found this discovery which he had done. So his parent took this coal to the archaeological survey. This happened in West Virginia, Buckhannon, 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 West Virginia. Okay, so he took this to the archaeological department, and then the archaeological department came, and then they saw, कि ये कौन से layer से ये मिला है coal. Okay, so then they came to know. Then they उन्हें जो करते हैं वो ये spear है, ये layer, so they measure it, and then they came to know that this lump of coal belonged to, to the layer which is estimated 300 million years old. How many? How much? 300? $300 million. जो गोल का जो लंप मिला वो उस लेयर से मिला जो 300 मिलियन years old था, मतलब 30 crore years old. So they were, very shocked, and because inside उसके अंदर कुछ गोल्डन कलर का कुछ निकल रहा था. So then जो उनका प्रोसेस होता है उससे उन्हें प्रोसेस निकाला, एंड जो वो चीज थी, उनने क्या बोलते हैं ना, जो अलॉय उनका टेस्टिंग होता है वो किया, तो मेटल का मिक्स, तो वो कॉपर का, जिंक का, टिन का, आर्सेनिक का, आयोडीन का एंड सेलेनियम का, ये मेटल से बना हुआ था वो. तो they were shocked कि how is that possible, because according to them human are like 1 lakh year old, 2 lakh year old, but यहाँ पे इनको ऐसे लेयर से मिला है लंप, जैसे वो डायनासोर की एज कैसे करते हैं, how do they determine dinosaur age? From the layer which they get, the bones,
ये बोलते हैं ये डायनासोर का है, ये इस एरा का है, ये उस एरा का है, ये उस एज का है, ना, बाय दैट लेयर दे डिटरमाइन, राइट? राइट, ज्योग्राफी में ये पढ़ा है ना आप लोगों ने? नो एनी ज्योग्राफिकल पर्सन हियर? कार्बन डेटिंग तो बाद में होता है, बट पहले क्या होता है? पहले लेयर्स होता है ना। आप कौन से जोरासिक एज किसको बोलते हैं? देयर जोरासिक एज, देन दिस इज अकॉर्डिंग टू द लेयर्स। उस लेयर से यदि बोन मिला है तो वो ये एज का, जोरासिक एज का है। उससे नीचे से मिलेगा तो और दूसरे एज का है वो, राइट? तो वो करते हैं, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है। So from the area which they got, that is around 300 million years old, that era, you know. So and this metal is mix of zinc, tin, arsenic, iodine and selenium and copper. तो उन्होंने देखा यार ये किसने मिक्स किया और क्या था पता है वो चीज? गरुड़. So they found this bell with Garud on the top of it. गरुड़ का ऊपर है, जब भी आप जाओगे कोई भी इस्कॉन टेम्पल में तो आपको वैसी बेल मिल जाएगी इसमें गरुड़। तो विष्णु, विष्णु की पूजा होती है उस बेल से। गरुड़ जिसमें होता है विष्णु की पूजा होती है उससे। तो इमेजिन दे फाउंड 30 crore years old बेल। सो ये देख के साइंटिस्ट लोग का दिमाग घूम गया, बोला हाउ इज दिस पॉसिबल, बिकॉज ये कौन बनाएगा, तो उन्होंने क्या थियोरी की इसके पीछे कि एलियंस आए थे, बिकॉज दे कुडंट गिव क्रेडिट, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सनातन धर्म, और फिर दोनों में एलियन नाम नहीं लिया। उन्होंने बोला कोई बाहर के प्लैनेट से कोई आया होगा एंड ही माइट हैव पुट लेफ्ट इट हियर, बिकॉज नॉट पॉसिबल फॉर इंडिया, फॉर एनीवन, बिकॉज देयर वाज नो लाइफ दैट टाइम हियर, so maybe someone came from other planet and they left it here. That was their explanation. And then इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। बट ये जो बेल है, ये माइकल क्रीमो, ही सद माइकल क्रीमो, दिस इज one Prabhupada disciple, he got this bell. I will put the article also in the content. He got this bell and he did his carbon dating on this bell then, with his method and everything. And then he told the exact date of this bell. It's around 32 crore years old. How much? 32 crore years old according to carbon dating. This bell is. So now you can understand that how, at least this much old का evidence तो हमारे पास में है मौजूद, कि there was some kind of deity worship going on in India. Not in India, in the world. Somewhere in the world was going on. So this evidence is already there. So deity worship is nothing new. The Murti Puja, there is this theory that only in the last 2,000, 3,000 years, all this temple came up, and people start doing deity worship. But even the people who are following the Vedic parampara, they say that previously that was only tapasya and all those things. Deity worship was started later. So this is a well documented evidence which they have, that deity worship is at least 32 crore years old on this earth. ऐसे तो ब्रह्मा का 155 ट्रिलियन इयर्स एज हो गया है, उतना पुराना डिटी वर्शिप है, बट जो भी फैक्चुअल एविडेंस अभी भी है, दैट इज अराउंड 32 crore old. So like I was saying, importance of DT, DT का क्या होता है, जब प्राण प्रतिष्ठा होती है DT के अंदर, तो जो I told स्वरूप शक्ति भगवान की DT के अंदर आती है. So DT is a very amazing concept, जो एक बार आपका जो मंदिर होता है जहां पे DT है, वो मंदिर का नेचर कभी चेंज नहीं हो सकता फिर. Why? Because once a DT has been installed with pran pratishtha, then that place is owned by the Lord. That place is owned by the Lord. So once a temple will always remain a temple. Once a DT will always remain a DT. यदि वो टेम्पल किसी ने ले भी लिया, समझो thousands of years हो गए,
यहाँ पे एक एक कृष्ण मंदिर था, ओके, और वो उनका पूजा बंद हो गया होना, एंड 200 500 1000 साल बाद में किसी और ने वो प्लेस ले लिया, और वो प्लेस को उसने अपना घर बना दिया, प्राइवेट घर उधर। फिर किसी को एविडेंस मिला कि जो डीटी थी यहाँ पे, क्या डिग करके या कुछ किया, मंदिर है कैसे निकला, और यहाँ पे ये मूर्ति वर्शिप होती थी। सो अकॉर्डिंग टू वैदिक सिद्धांत, that place will have to be given back to the mandir, because a mandir, even after being destroyed, is always a mandir. A deity, even if आप उनकी पूजा बंद हो गई है for thousands of years, but again it's the same, murti only. It never loses its power. This is the significance of pran-pratistha. Why it is, why do you think it is that? Like in the Ram Mandir case, they gave this evidence. This was the most important evidence, in the Ram Mandir case. A temple, once a temple, always a temple. Because a temple is not a place of someone else. It's Lord's own place. Lord owns the place. So even if you have taken it maybe by war or something, but if the Lord is present there, then it is a temple always. Then you have to give it back to the temple only, even if someone has won it or someone has taken it away. So why you think this is there? Who can tell? Why once a temple, always a temple? Once a deity, I told you the Sarup Shakti descends in the deity and the temple. Sarup Shakti क्या है? Samvet Sandini Haladini. What is Samvet Shakti? Sat Chit Anand. What is Sat? What is Sat? What is the meaning of Sat? Eternal. Yes. Eternal. Eternal. Sat means eternal. So when the eternal Shakti descends in the Lord, that Lord is eternal. The Lord is eternal. The place is also eternal. So there is, you cannot say, अरे ये destroy हो गया, नहीं, eternally है वहाँ पे अब. Eternal, fully cognizant, full of knowledge and full of ananda. So this eternity, this Samved Shakti of the Swarup Shakti, which descends, that makes the place eternal. That makes even your house eternal. Vaikunta. This is the reason why your house becomes Vaikunta. Because Vaikunta means eternal. Vaikunta means full of knowledge. Vaikunta means bliss. So this Swarup Shakti that will descend, that makes your house eternal. Now, yeah. म्यूजिक रूम तो आपका लेकिन अलग से है ना, दरवाजा है ना एक, तो सेपरेट ही है वो. दैट इज नॉट, सो नाउ कौन कौन से फॉर्म होते हैं मतलब मूर्ति डीटी के, डिफरेंट फॉर्म क्या क्या होते हैं? 8 types of deity forms are there. Okay, so all of these are categorized as deity, which I'm telling you. कौन कौन से? शैली, दरुमयी, लौही, लिप्या, लक्ष्य च, शक्तति, मनोमयी, मानिमयी, प्रतिमास्त, विध, स्मृत. मतलब the 8 types of deity form are declared to be form carved from a block of. These are the 8 different forms that are considered as deities. The first is the form carved from a block of stone, like marble, marble, granite, or any gemstone, jade or jasper or crystal or anything form. So in that, the pran-pratistha can take place by both Panchratika and the Bhagavad Gita. The second, form carved by wood, in which Jagannath comes, all the wood form comes. The third, form made by metal. So इसमें metal के जितने भी होते हैं, पंच धातु के जो होती है, गौर निताय की डिटीज पंच धातु की होती है, राधा कृष्णा की डिटीज पंच धातु की होती है, ये सब उसमें आता है. राइट. क्ले के हम जो बनाते हैं, जो देखा होगा, स्पेशली हमारी वैष्णवी, क्या नाम है, विलास मंजरी देवी दासी, जो क्ले के फॉर्म्स बनाती है, तो इवन दैट फॉर्म इज वर्शिपेबल. ओके, जो क्ले से बना हुआ है, उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा बोथ भाव, पंचरात्रिका बाय मंत्रास एंड बाय योर भावा, भागवत विधि, दोनों से हो सकती है.
पेंट से, पेंट आ गया इसमें. पेंट मतलब आप जो पेंटिंग करते हो ना, आप इफ यू पेंट, राइट, वॉट एवर यू कैन डू नाइस पेंटिंग ऑफ द लॉर्ड, आपके घर में रख सकते हो. दैट ऑल्सो with bhava or by mantras in the temple, even that can be, that is also as good as the deity form of the Lord. उसमें भी भगवान की स्वरूप शक्ति डिसेंड हो सकती है. इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि our paintings, ISKCON paintings are window to the spiritual world because it has swarup shakti in it. So if you get attracted to Krishna's pictures, also means your bhakti starts. Your bhakti starts. Yeah, digital art, any art. Painting मतलब वही पेंट में वही हो गया. And my Krishna consciousness started because of the paintings only. And I'm clear. Like yesterday I was telling, right? I used to love painting. I saw those paintings. I started drawing those paintings. I got attracted to Radha Krishna and Krishna, and this is how my bhakti starts. So, why? Because it is already pran-pratistha. The Lord can attract you and make you a devotee and completely change your life and revolutionize and completely 360 degree of your life just by his painting. So that is also non-different, okay? Your digital art, your painting, your whatever, or even the picture. This comes even like the picture, you take the click the picture. That also comes in the painting. So that also the same thing, okay? सैंड से बना हुआ, सैंड से बनी हुई मूर्ति भी होते हैं ना. हम जैसे बहुत देखा होगा, किसी ने मट्टी से मूर्ति बनाई भगवान की, भगवान को वर्शिप किया, भगवान उसमें अवतरित हो गए. बहुत सा हमारा वेदों में, पुराणों में आप देखोगे कि लोगों भगवान जैसे तिरुपति बालाजी का ऐसे ही हुआ था, राइट. वो गाय थी वहां पे, गाय मूर्ति के ऊपर वाटर क्या दूध दे रही थी, एंड विष्णु गॉट द मिल्क, सो लाइक दैट. द सैंड से बना हुआ विग्रह भी है. जो आप जाते हो ना जू बीच कभी, तो सैंड से बनाते हो एक्चुअली, तो उसमें हमको विग्रह नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम उसको तोड़ देते हैं, मतलब हम अपराध कर रहे हैं भगवान का, राइट. तो वो भी सैंड से बना हुआ. यू कैन मेक, इफ यू डोंट हैव एनीथिंग, इफ यू डोंट हैव मनी टू बाय द डीटी और एनीथिंग और क्ले, जस्ट यू कैन मेक द डीटी ऑफ द लॉर्ड जस्ट विद द सैंड आल्सो एंड स्टार्ट वर्शिपिंग. एंड उसके अंदर भी दोनों विधि से, घर पे अगर हो तो भागवत विधि से प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, और टेम्पल में है तो पंचरात्रिका विधि से हो जाएगा. Made of jewels, all kind of this navaratnas and semi-precious and precious jewels, that is also there. And the amazing part is the ninth. What is the ninth? जो आप सब लोग कर सकते हो, जिनके पास में मूर्ति नहीं है. कितनों के पास में नहीं है डीटीज, या पिक्चर भी नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है. Yeah, Manasi, by the mind, conceived within the mind, Manasi Seva. So the Manasi Seva also, if you don't have deities, if you don't have murti in your house, if you don't have picture also in your house, you don't want to, because you may be doing a lot of going here and there. So just by making the form of the Lord in your mind, you can worship the Lord the same way which I am telling you, which we are going to discuss, with bhava and with panchratrika vidhi. Like I told yesterday, right? I don't know how many of you attended yesterday's session. I told that, how to do Mansi Seva. You can, when you're chanting, okay, when you're chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, like that, you're chanting in Brahm Murta. So you can do entire Mansi Puja. You can go and wake the Lord in the morning with the process which I'll tell you, and then you can make the Lord gargle, make the Lord brush, then you can offer water to the Lord. You can, in your mind, you can change the Lord's poshak, give the Lord new poshak. Before that, bathe the Lord. Whatever you want to do, you can do in the mind, then, you can dress the Lord very beautifully. You can put the, dhoti on Krishna. You can put his rings on his toes. You can make design on his legs, beautiful flower design on his legs. You can give him a kamarband. You can give him a payal. You can give him a beautiful bansuri in your mind. You can give him a beautiful turban, with more punk falling towards Srimati Radharani. You can give him a nice kundal. You can give him a nice, nose ring, and make nice designs below his
eyes, you can give him maska, like kajal on his eyes, like that, and a musk dot on his chin, a nice design on his cheeks. You can give him a nice, uh, pearl necklace on his neck, then a big necklace, and then a Vajanti mala. Then on his arms you can give him a baju band, and a bangle, small kada. Then the rings, like that. You can, and on his curly hairs you can put small bud, like buds of flowers there. So like that you are decorating the Lord in your mind while chanting. So you are doing the same Brahma Murta which we do, Mangal Arti. Okay? And while doing this, you are chanting, and also you can go on, singing Samsara in your mind. Samsara Dava Nalalita Loka Tranaya Karunya Gana Ganatvam Praptasya Kalyana Gunarnabhasya Vande Guru Shri Charanarvindam. This you can sing. Or Vibhavari Sesha Aloka Pravesha Nedra Chadi Uta Jiva. So, three things are happening. Chanting is going on. Your mind is not going anywhere. Your mind is in Mansi Seva of decorating dressing the Lord and decorating Him. And simultaneously, your mind is also singing Samsar Dava. Whole Mangal Arti you can do that way. Whole bhoga you can offer that way. Arti you can do that way. Like, first you decorate Krishna, I told, then you can do Radharani, give her a nice lehenga, nice blouse, nice, chunri, hair, comb her hair nicely, make choti, put some nice, mala around on her choti, like a mogra ki, mala you can give on the choti, give her a nice kalanki on her forehead, a mang tika, a nice tilak, mascara and kajal on her eyes, nice designs, a pearl nose ring, a nose ring going to the ears, like that, beautiful, hanging earrings, her choker, on her neck, one mala, one gold something, like that is coming on her chest, and then her, on her waist you can give her baju band, and on her arms, you can give her, like armlet पे होता है वो दे सकते हो, bangles, on her rings you can give different rings, on her toes you can give different rings, pile, like that way, one lotus in her right hand or left hand, one rose in her right hand, nice garland, full Vajanti mala garland, or lotus garland you can make, like that you can do, so this is also as good as, so those who don't have deities at home, when they're chanting they can do this. This is how their deity worship can be. This is Bhagavad Vidhi. This doesn't come in Panchratika Vidhi. This is Bhagavad Vidhi. Okay. So, because Panchratika Vidhi means, you can't go to, like I told, it's taken nursing Lakshmi Narayana worship. But when you do it Bhagavad Vidhi, with bhava, then it is taken as Krishna, Radha Krishna worship. So like this, then you can do Aarti also in your mind. The whole deity worship, can be done, Aarti, you can start with agarbatti, on the feet and the navel and around the body. Then Radharani's feet, navel around her body. Then the lamp, five lamp, you can lit. And then on the feet, on the navel, around the face and whole body. Then same Radharani, on the feet, on her navel, on her around her face and the whole body. Then same next is conch shell around her face and the whole body, around her face and the whole body, And then comes the this handkerchief from top to bottom, four times you can do, and then then comes the flower. You can offer flower then, around whole around their body, eight rounds you can do a flower in the plate, like in your mind, then do chamar, then do more punk, like that you whole worship. Then you can go to the kitchen and cook nice prasadam for them, like you'll do in an ordinary, if you have Radha Krishna Murti, and you cook nice chappan bhog in your mind and offer it to them in your mind. And how to offer it, that is very important. What we have, because this is deity worship course, so I'm going to take you one level up. So offering food. So
How many of you know the bhoga offering mantra? How many of you offer bhoga to the Lord? ऑफर करना माइंड में तो ऑफर कर सकते हो, वहां तो बिना अनियन गाली का बना सकते हो, राइट? सो व्हाट आर थ्री मंत्रास? नमो ओम विष्णुपदाय, द सेकंड मंत्र. Yeah, what are three mantras? Namo Vishnupadaya, then Namo Mahavadanyaya, and then Namo Brahman Devaya. Okay? Right? Prabhupada Pranam Mantra, Namo Vishnupadaya, then Namo Mahavadanyaya, Krishna Prem Padayate, then Namo Mahavadanyaya. Namo Brahman Devaya को ब्राह्मण हिताय च, राइट? ये ऑफर किया. उसके बाद में क्या? You want to go one step forward? You want to know? वन अप जाना है कि इसी में सेटिस्फाई रहना है? अभी थ्री टाइम्स. नमो मावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्वेषे नमः. नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. You know, all the three mantras you can put, Samarth you can put in the content, Prashadam offering mantra. So everyone can take from the content. Okay? Okay? So we are personality, we are very personal. Our Krishna conscious movement is very personal. Right? So every deity has a personal mantra when you offer. You say you chant these three mantras and then you chant the Moola mantra for the deity. Okay, so that mantra also chanted three times. So what is the Mool mantra? For example, if you have Gopal, okay, Gopal means Krishna. So what will you chant? Once you offer this three times, and then you have to say, लिख लो. No, first Prabhupada, then Namo Mahavadanyaya, and then Namo Brahmanaya. There's three mantras, nothing else. Okay, don't confuse Pillai. These are three mantras, for everyone, because everyone doesn't have Guru. So these are the three mantras. Okay, you have to hear. Otherwise, you'll get confused. कंटेंट में डालेंगे, आफ्टर होगा कंटेंट में डालेंगे. नाउ यू कैन राइट डाउन ऑल्सो. थोड़ा पेन लो और राइट डाउन. Then you have to chant this mantra after offering the three mantras. For Krishna, the mool mantra is Klim, 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 Krishnaya Namaha, Klim, Krishnaya Namaha, Klim, Krishnaya Namaha. This is a mool mantra for Krishna. This mantra only in आप लोगों को बता रहा है, so who are there, don't tell to everyone. Okay, yeah, three times. Klim Krishnaya Namaha, Klim Krishnaya Namaha, Klim Krishnaya Namaha. Yeah, Klim Krishnaya Namaha, Klim Krishnaya Namaha, Klim Krishnaya Namaha. This is Krishna's mool mantra. This will help you develop a personal relationship with Krishna. Okay? हाँ, ये टॉप सीक्रेट मंत्रास है. ये मंत्रास खाली उन्हीं को बताते हैं जो डीटी वर्शिप कोर्स लेते हैं. ओके? और जो डीटी वर्शिप करना चाहते हैं घर पे, उन्हीं के लिए होता है. नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होता है. बाकी लोगों के लिए वो तीन मंत्रा वर्शिप यू कैन ऑफर विद दैट. ओके? सो ये जो क्लिम कृष्णा नमः है ना, ये मंत्रा आप बाहर हो ना कहीं पे भी, तो वहां पे भी दिस, इफ यू यूज दिस मंत्रा, देन the bhoga we are offering, that really becomes prasadam. That really becomes prasadam. 3 times. 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 3 times
ना मैं आ रहा हूँ राधा, वन बाय स्लोली स्लोली सबके लिए बताऊंगा। गौर नेता है, वेट, स्टेप बाय स्टेप, ओके, धीरे धीरे जाना है ना। ना ये मूल मंत्र केवल कृष्णा के लिए है, जिनके पास में कृष्णा है, मतलब गोपाल की मूर्ति है ना, केवल उनके लिए है ये मंत्र। क्लीम कृष्णाय नमः, ओके। You have to understand that this पंचरात्रि का विधि वॉज गिवन बाय सनातन गोस्वामी, ओके। उन्होंने पूरा वेदास खंगाला और उन्होंने अपनी हरि भक्ति विलास लिखी, जहां पे गेव द होल पंचरात्रि का विधि, ऑल द मंत्रास, एवरीथिंग। एंड देन गोपाल भट्ट गोस्वामी, राधा रमन जी के, he introduced the Bhagavad Vidhi. This is Panchratrika Vidhi by Sanatana Goswami, and then Gopal Bhatt Goswami introduced the Bhagavad Vidhi. So Prabhupada told that the worship in Radha Raman is the best type of worship because it has Panchratrika plus Bhagavad Vidhi. So, these mantras, this claim, Krishna Nama, this is in one sense a Gayatri mantra also, not complete Gayatri, but to develop to connect with Krishna. So when you chant this mantra, your food will directly go to Krishna. It will, it has to go. If you chant this mantra with bhava, it has to go to Krishna. This is such a powerful mantra. Klim Krishnaya Namaha. Now for Radha Rani, जिनके पास खाली राधा रानी है, होती है कि काफी लोग होते हैं जो खाली राधा रानी को वर्शिप करते हैं, उनके लिए है श्रिम, श्रिम, SRIM, श्रिम, रम, राधा राधिकाय नमः, श्लिम रम राधिकाय नमः, श्रिम रम राधिकाय नमः, SRIM, श्रिम, RAM, रम राधिकाय नमः मूल मंत्र है, 3 बार बोलना होता है मंत्र, ओके। अब जिनके पास राधा कृष्णा दोनों हैं, राधा कृष्णा दोनों हैं, वो ये 3 मंत्र बोलेंगे, भोग के मंत्र, उसके बाद में ये मंत्र श्रिम क्लिम, श्रिम, SRIM, श्रिम। ये सब लोग नोट कर लो क्योंकि आपके में राधा कृष्णा की पिक्चर भी होगी, तो उसके लिए भी ऐसे बोलना है, ओके। श्रिम क्लिम, CLIM, क्लिम, राधा कृष्णाभ्यो नमः, श्रिम क्लिम राधा कृष्णाभ्यो नमः, श्लिंग क्लिम राधा कृष्णाभ्यो नमः, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, SRIM, श्रिम, KLIM, क्लिम, राधा कृष्णाभ्यम नमः, कृष्णाभ्यम नमः। Noted? Everyone noted down for Radha Krishna picture? SRIM, KLIM, राधा कृष्णाभ्यम नमः। आगे बढ़े। हाँ, स्लिम क्लिंग राधा कृष्णाभ्यो नमः, वेरी नाइस। अब जिनके पास खाली बलराम है, बलराम मतलब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के बलराम है ना, बलराम इज देयर, उनके लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दिस इज द मूल मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। This is for Balram. If you have Bal Gopal, then the Krishna mantra. If you and then Radha Krishna, then Radha Krishna, Slim Klim Radha Krishna Bhyo Namaha. ऐसे बोलना है ना। जो भी डीटी है आपके पास में, उनको आप भोग ऑफर करते हो ना, तो वो टाइम पे उनके पास जाके उनका मंत्र बोलना। If you have Advaita Acharya, means if you have the Panch Tattva, Panch Tattva की पिक्चर भी होती है हमारे पास, तो then Klim Advaityaya Namaha, Advaityaya Namaha, Advaita Acharya Slim Klim, KLIM, Klim Advaityaya Namaha, Gadadhar Pandit Shrim, SRIM, Shrim, Gadadharaya Namaha, and Srinivas Thakur Shrim, SRIM, Shrim, Srinivasaya Namaha. लिखा सबने? या चैन राधा कृष्ण वाला। नाउ गुरु के लिए ऑफर इट टू योर गुरु, ओके। AIM, इम ना, हम मम है वो, AIM पर डॉट इम,
गुरुवे नमः, इम गुरुवे नमः, इम गुरुवे नमः, AIM इम, GURAVE गुरुवे नमः. The last one is SRM Shrim Srinivasaya Namaha. Srivasaya Namaha. SRM Shrim SRIVASAY Namaha. For Guru in Gaurave Namaha. Let's see, we will put this also. Don't worry. But still you can note down. तो ये जो मंत्र मैं बता रहा हूं, ये खाली भोगा नहीं, पानी ऑफर करना है, आपको ड्रेस ऑफर करना है. आप जब भी ड्रेस चेंज करो भगवान की, वो टाइम पे उनका मंत्र चेंज करो. जो भी उन भगवान से आप डील करो, कृष्णा से, राधा से, उनका मूल मंत्र यू हैव टू चैंट. सो गुरु इज इन गौरवे नमः, परम गुरु, गुरु के गुरु, उनके लिए आपको अगर कुछ ऑफर करना है, जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर को हम पुष्पांजलि ऑफर करते हैं, तो उनके लिए ओम परम गुरुवे नमः, ओम परम गुरुवे नमः, ओम OM परम PARA में परम गुरुवे नमः. सुभद्रा का ओम ह्रीम भुवनेश्वराय नमः. देन जगन्नाथ जी का ओम गोपीजन वल्लभ नमः, ओम गोपीजन वल्लभाय नमः, ओम गोपीजन वल्लभाय नमः. जगन्नाथ जी ओम गोपीजन GOPIJANA गोपीजन वल्लभाय VALLABHAY नमः. ओम गोपीजन वल्लभाय नमः. हुआ क्लियर? जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों का हो गया, गोपाल का हो गया, राधा कृष्णा का हो गया, कृष्णा का हो गया, राधा रानी का हो गया, अद्वैताचार्य, श्रीनिवास पंडित, गदाधर पंडित, सबका हो गया, गुरु का हो गया, परम गुरु का हो गया. राइट. अब शालिग्राम अगर किसी के पास में है तो, इफ यू हैव शालिग्राम, देन ओम नमो भगवते वासुदेवाय. शालिग्राम के लिए भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सो सेम बलराम जी के लिए भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और शालिग्राम के लिए भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सो ये जो है मंत्र है, मूल मंत्र, आप कुछ भी वो डीटी को ऑफर करो, ये मंत्र से ऑफर करना होता है, तो ही वो एक्सेप्टेड होता है. भोगा के लिए आपको पहले 3 मंत्र करने पड़ेंगे, ये मंत्र, लेकिन बाकी के लिए आपको भोग के मंत्र नहीं चैन करने हैं. जैसे आप ड्रेस पहनाओगे डीटी को, या कुछ भी, या गार्लेंड पहनाओगे, है ना, तो उनके लिए भोग के मंत्र नहीं है. लेकिन ये मंत्र सबके लिए, जब भी आपका एक्सेप्ट करेंगे, हमको लगता है कि हम माला पहना रहे हैं भगवान को, भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना. मंत्रा से हम भगवान को ऑफर करना पड़ता है. तो मंत्रा से व्हेन कृष्णा को कर रहे हो तो मंत्रा से, राधा कृष्णा को कर रहे हो तो मंत्रा से, जगन्नाथ जी को कर रहे हो तो मंत्रा से ऑफर करो. गार्लैंड, बांसुरी, या ज्वेलरी, मतलब हर एक बार पूरा सारी ज्वेलरी के लिए एक बार मंत्र बोलना है, सारे ड्रेस के लिए एक बार मंत्र बोलना है ना, बांसुरी के लिए एक बार मंत्र बोलना है, लाइक दैट. पानी के लिए ये एक बार मंत्र बोलना है. जो भी आप उनको, गार्लैंड के लिए एक बार मंत्र बोलना है आपको, सुलाओ तो एक बार मंत्र बोलना है, उठाओ तो एक बार मंत्र बोलना है आपको. ये उन डीटी से आप जो भी इंटरेक्शन करो, ये मंत्र के साथ में होता है. अंडरस्टूड? दिस मंत्र इज आफ्टर नमो. फॉर भोगा इट इज आफ्टर नमो विष्णुपदाय, नमो महावदन्याय, देन नमो ब्राह्मण देवाय, देन द हरे कृष्ण महामंत्र, एंड उसके बाद में ये मंत्र बोलना है जस्ट फॉर भोगा. बट बाकी सारे चीजों के लिए ये मंत्र आपको सेपरेटली बोलना है, हर एक चीज ऑफर करने के टाइम पे. ज्वेलरी से लेके, सुबह कुल्ला कराने से लेके, रात को सुलाने से लेके, हर चीज के लिए आपको ये मंत्र बोलना है, जब भी आपके डीटी आपका एक्सेप्ट होता है उनको. ओके. Yeah, you ring the bell also. You have to ring the bell while chanting these mantras. The ring the bell मतलब worship में तो bell तो करना ही पड़ता है. Without bell, they do not accept only. No, these जब आप offering करते हो मंदिर में, that time the pujari is offering. So the pujari is chanting these mantras already. आप देखते हो ना, if you have seen, जो पुजारी रखते हैं, then घंटी बजाते हैं, then वो अपने हाथ से कुछ करते हैं. Have you noticed? अपने हाथ से ऐसे आगे आगे करते हैं वो. आपने मंदिर में नोटिस किया है कि जब पुजारी ऑफर करते हैं तो अपने हाथ से जेस्चर करते हैं आगे आगे, you take this.
So they're chanting this mantra that time. Om Krishna Bhai Nama, Om Radha Bhai Nama, like this mantra they're chanting. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Nama. ये mantra वो time जब कर रहे होते हैं. Understood? So this is how you offer it to the Lord. Yeah. So we will today, stop here and then next. Jaya Radha Madhava